Hi guys, welcome back to Class of Learning. You are with Rahul Sharma. Sir, how to prepare for psychological examinations. अब यहाँ पे हम बात करें MA Psychology first year and the very first paper series, the very first paper where MPC 001, that is cognitive psychology, learning and memory. The first thing, that is cognitive psychology. How to prepare cognitive psychology in a short span of time, as we are having a papers सीरीज इज मैक्स 20 days अभी शॉर्ट. तो अब इसको कैसे तैयार करने का तरीका क्या होगा, एंड व्हाट आर द बेस्ट क्वेश्चन दैट वी नीड टू प्रिपेयर. यस, हे आई एम टेलिंग यू द बेस्ट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स. तो आप कैसे करने वाले, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या इन क्वेश्चंस को ऑन टिप कर लें और हम पेपर क्रैक कर लेंगे. यस, यू कैन ईजिली क्रैक द पेपर बाय प्रिपेयरिंग दीज क्वेश्चंस. लेट्स स्टार्ट द क्लास. ऐसा करना, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम आए गाइस, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आप हर चीज को एक्सेस कर पाए. ऑल द वीडियोस रिलेटेड दिस यू कैन एक्सेस फ्रॉम दिस चैनल. द नोट्स डेफिनेटली यू कैन गेट, वो फ्री नहीं है, उनके लिए पे करना पड़ता है. एंड देन कम टू द पॉइंट. द फर्स्ट, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, लर्निंग एंड मेमोरी. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन इंटेलिजेंस. मेक श्योर ये क्वेश्चन कंफर्म है, पेपर में आएगा. डिफाइन इंटेलिजेंस, गिव अ क्रिटिकल अप्रोच टू टू फैक्टर थ्योरी. सर, टू फैक्टर थ्योरी, GNS. आई होप उसकी वीडियो आपने देखी होगी, मैंने थोड़ा टाइम पहले डाली थी. द टू फैक्टर थ्योरी कंफर्म है, शॉर्ट नोट में भी आता क्वेश्चन. नेक्स्ट वन, डिस्क्राइब कॉग्निटिव साइकोलॉजी एज इट इज टुडे. व्हाट इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी? कॉग्निटिव होता क्या है? मेंटल प्रोसेस दैट वर्क्स फॉर द ह्यूमन एंड हाउ इट वर्क्स, उसके कॉन्सेप्ट के कैसे क्लियर करते हैं. देन डिस्कस द मेन डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी. अब इसके डोमेन्स बताने. नेक्स्ट वन, डिस्कस कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. इट बीन डिफरेंट जाना. It is information processing, cognitive information processing, CIP, model of learning. I hope you guys are lying. Sir, lying नहीं, writing. थोड़ा गड़बड़ मैंने कर दिया. You guys are writing. क्योंकि अगर मिस हो गया तो डेफिनेटली क्वेश्चन बार बार नहीं मिलने वाले. मेरी इंस्टा आईडी को फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है अपलोड हो जाएंगे. इंस्टा आईडी बीच में आ जाएगी अभी. नेक्स्ट, क्रिटिकली इवेल्युएट स्टर्नबर्ग. क्रिटिकल इवेल्युएट स्टर्नबर्ग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच. स्टर्नबर्ग इंफॉर्मेशन अप्रोच अलग है, कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अलग है. डिस्कस द लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल बाय क्रेक एंड लॉकर. प्रोसेसिंग मॉडल्स, आई रिपीट, द प्रोसेसिंग मॉडल्स बाय क्रेक एंड लॉकर. नेक्स्ट, डिफाइन क्रिएटिविटी. आई लव दिस क्वेश्चन. व्हाई आई लव दिस क्वेश्चन? व्हेन यू रीड दिस क्वेश्चन आपको पता लगेगा, पूरा डिटेल में समझना है. Define creativity, explain the measurement of creativity. How can I measure the creativity? The measure of creativity मतलब कैसे यार? Can I describe Bloom taxonomy of cognitive domain with examples? जिन्होंने B.Ed किए क्वेश्चन को टिप पे होगा, उन्होंने मेरी वीडियोस भी देखी होंगी, फॉलो भी किया होगा. तो यहाँ आते हैं. Describe now Bloom's taxonomy of cognitive domain and explain. Describe the development of memory with the reference of information processing. तो memory का reference with the reference of information processing. Come next one. Critically discuss the investment and confusion theory. The investment and confusion theory of creativity. Next, describe the various impediments. I repeat, impediments of problem solving. ये problem solving का क्वेश्चन 100% आएगा, किसी ना किसी फॉर्म में 100% पेपर में होगा. इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना आपने. Critically evaluate the level of processing model of memory. Model of processing, model of memory. Describe Guilford, I repeat, describe Guilford structure of intellectual model of intelligence. So what is intellectual? Intellectual model of intelligence. Next, compare and contrast the behavioristic theory and inaptness theory of the language acquisition. Actually, it is based on language acquisition. Examine Victorine journal problem solving strategy. So Victorine's, yes, Victorine's journal problem solving strategies. Next one, discuss Kint's model of the comprehension of language processing. I repeat, Kint's model of comprehension of language processing. Jump from next question.
एक्सप्लेन द इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, द सेम क्वेश्चन आई हैव टोल्ड यू अर्लियर बट थोड़ा सा स्लाइटली सा डिफरेंस था. डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी कंफर्म है, क्रिएटिविटी क्या है, अब यहाँ स्टेजेस आ गई. हाउ विल यू रिलेट क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, अब दोनों कैसे रिलेट करते हो आप. नेक्स्ट, व्हाट डू मीन बाय मल्टीलिंग्विज्म. जिन्होंने एमए इंग्लिश में एस्पेक्ट्स लैंग्वेज पढ़ा वहाँ मल्टीलिंग्विज्म पढ़ाता हूँ मैं, उसकी वीडियोस भी हैं. यस दैट्स ट्रू दैट एमए इंग्लिश के स्टूडेंट मैक्स में है, बट साइकोलॉजी के स्टूडेंट भी कम नहीं है और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. तो आपने मल्टीलिंग्विज्म हमें क्लियर कर लेना है. व्हाट डू मीन बाय मल्टीलिंग्विज्म, डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ मल्टीलिंग्विज्म, डिस्कस स्टेजेस लैंग्वेज एक्विजिशन. देखो ये एक पेपर है एमए के अंदर, मैंने बोला ना वहाँ एस्पेक्ट्स लैंग्वेज, उसका 40% पार्ट आपके पेपर में कि लैंग्वेज एक्विजिशन यहाँ है हमारे पास. Discuss the stages of language acquisition. Then describe the development of Stanford Binet scales. यार ये पेपर में 100% होगा. I repeat, Stanford Binet scales explain the structure and interpretation of Stanford Binet scales. इसको आपने क्लियर कर लेना है. हमने स्कूल में भी पढ़ा था, हमें स्केल्स दिए जाते थे, अगर आपको थोड़ा सा याद हो साइकोलॉजी में. Describe the various types of problems. What do you mean? Various types of problems. Next, critically analyze any one theory of language acquisition. Yes, here I need to mention the any theory तो बोला क्या of language acquisition. How do we measure intelligence? सर ये क्वेश्चन था सेम, लेकिन यहाँ पे describe the standard Binet test इसके अकॉर्डिंग है. Next, discuss Waugh and Norman. I repeat, discuss Waugh and Norman model primary and secondary memory. Now, what is memory? How to differentiate between memory, primary and secondary? सही आपने असाइनमेंट बनाया था तो भी क्वेश्चन किया था, आई होप किया हो, कॉपी पेस्ट ना किया हो इस लेके. क्या व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्व इन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन. प्रोसेस बताओ भाई लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में. एनालाइज द एनवायरमेंटल एंड कल्चरल ब्लॉक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग विद एग्जांपल. डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ एल्फ्रेड बायनेट इन द फील्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस. द नेक्स्ट 3 क्वेश्चन, आई रिपीट द नेक्स्ट 3 क्वेश्चन. कहीं ना कहीं लगेगा कि हम सब पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग है और ये आने चाहिए आपको ऑन टाइम. डिस्क्राइब टॉलरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग. टॉलरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग. डिस्क्राइब हॉलिस्टिक एज अ स्ट्रेटजी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. डिस्कस द न्यूरोलॉजिकल इशू रिलेटेड टू मेमोरी. द लास्ट वन इज रियली इंपॉर्टेंट, द न्यूरोलॉजिकल इश्यूज ऑफ मेमोरी. नेक्स्ट वन, व्हाट आर द फंक्शन लैंग्वेज. लैंग्वेज फंक्शन क्या, जनरल क्वेश्चन है आपको आना चाहिए. डिस्कस द स्ट्रक्चर लैंग्वेज. Discuss the neuropathology, RP, neuropsychology basis of learning. What is neuropsychology basis of learning? What is the role of various type of thinking involved in solving different kinds of problem? I'm repeating, what is the role of various type of thinking involved in solving different kinds of problems? Next one, examine the investment and confluence theory of creativity. Should I repeat? Examine the investment and confusion theory of creativity. सर इन्वेस्टमेंट था लेकिन confusion थोड़ी नहीं थी. Discuss the high level of linguistic analysis. What is linguistic analysis? And the high levels down. Discuss Vernon's hierarchical theory of intelligence. I'm repeating this question. Discuss Vernon's hierarchical theory of intelligence. Write short note of following. Yes, you guys need to write on short notes. पहला, autism. I repeat, autism. इसको ऑन टिप करना गाइस. नेक्स्ट, प्रोडक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग. I repeat, प्रोडक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग. नंबर 3, की इश्यूज इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी. की इश्यूज इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी. नेक्स्ट, स्ट्रेटजी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. फंक्शनल फिक्सनेस. फंक्शनल फिक्सनेस. टाइप्स ऑफ मेमोरी. I repeat, types of memory. Factors affecting problem solving. स्पीच एक्ट्स. आई रिपीट, स्पीच एक्ट्स. एक सोल्यूशन दूंगा छोटा सोल्यूशन फ्री का. पहले शॉर्ट नोट्स करना, सीरियसली पहले शॉर्ट नोट्स करना, इनको ऑन टिप करना, देन गो फॉर द डिटेल नोट्स. जो क्वेश्चन होते हैं ना लॉन्ग क्वेश्चन को बोलते हैं उनको करना. लॉन्ग टर्म मेमोरी. ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन. सेंसरी मेमोरी. जी फैक्टर एंड एस फैक्टर. आपके मेजर क्वेश्चन डील कर लिए नजर. जी फैक्टर एंड एस फैक्टर, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, 2 फैक्टर थ्योरी, स्पीयर्समैन. आपने अगर हमने क्वेश्चन को पढ़ा है थॉरली समझा तो एक एक चीज़ ऑन टिप हो जाएगी.
देन डायसोप्रोसोडी. सर व्हाट इज डायसोप्रोसोडी, इसको कैसे क्लियर करेंगे? व्हाट इज दिस? थिंकिंग अलाउड. व्हाई थिंकिंग अलाउड? वर्क एज, सर टीम वर्क कहेंगे या कुछ और कहेंगे? यस वी डू हैव प्लान, एक वर्ड है इसके लिए, मैंने पढ़ा रखा आप लोगों को, आई होप आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में. वर्किंग मेमोरी. व्हाट इज वर्किंग मेमोरी? And the last, naturalistic intelligence. Yes, that is really very important. The naturalistic intelligence. Hope you guys are going to clear all these questions at a very first step. कि सबसे पहले सारे questions on tip कर लेंगे. And then you guys jump up to the next level. That is the next video that I'm going to upload very soon for this particular video. Till then, keep watching, like, share, subscribe. I think it's worth to watch. Bye guys.